Hello learners, this is Rajat from Bite the Code. First of all, Happy New Year to you and your family. I hope this year brings happiness in your life and you achieve your ambitions and all your worries come to an end. तो साल के पहले दिन की शुरुआत हम एक कोर्स से करेंगे which is Java Programming Course for Beginners in which we will cover all the core concepts that you need to become an industry ready Java programmer. Also, this course is not only for beginners but उनके लिए भी है जो अपने बेसिक्स को ब्रश अप करना चाहते हैं क्योंकि इस कोर्स में you will find assignments also at the end of each and every module. We will see the entire structure of the course in a bit. ये कोर्स हम पढ़ेंगे फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव. जो कोर कॉन्सेप्ट्स आप इस कोर्स में सीखने वाले हो वो अलाइंड है विद जावा प्लेटफॉर्म एससी. एससी मींस स्टैंडर्ड एडिशन. स्टैंडर्ड एडिशन क्या है? It defines everything from the basic types and objects of the programming language to high-level classes that are used for networking, security, database accesses, GUI development, and XML parsing. And Java EE सीखने के लिए you have to learn SC because EE has been built on the top of SC platform. So enough introduction. Let's see the contents now. So these are the contents that we are going to have in this course. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट एंड व्हाई ऑफ द प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ें, प्रोग्रामिंग क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू जावा. देन आफ्टर दैट we will move on to keywords, variables, identifiers and data types. Then we will move on to operators, type conversion, selection control structure जिसमें हमारे पास if else, if, nested if, switch case. And ये इतना मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद we will have our first set of assignments. As you can see, कुछ पर्टिकुलर मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद we will have a set of assignments. Like here we have assignment set 1, then we have set 2, set 3, and this is all पूरे कोर्स में ये ऐसे करके हमने अरेंज किया हुआ. So after completing each module, we will be having some set of assignments. फिर we will move on to iteration control structure, जिसमें हम while, do while, for loop इन सब के बारे में पढ़ेंगे. We will also see some jump statements and selection control structure. So this is for the iteration control. After that we will move on to object oriented programming, जिसमें ये सब concepts हम पढ़ने वाले हैं. Methods, then access modifiers. We will also look at this class diagram concept, array, string, so many concepts we have. Final keyword, interface, जितने भी important और crucial topics हैं जावा के core concepts जो हैं वो सब हम देखने वाले हैं. And this is going to be very very important for अगर हम देखें for a beginner who is very new to the language. So ये सब concepts बहुत important हैं and you should know each and everything in detail. तो यही सब कुछ रहेगा इस कोर्स में. एंड ड्यूरिंग द कोर्स अगर आपको कभी भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन our telegram channel, and if you have any queries just post your questions there. I'll try to answer each and every one of you. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आप सबकी हेल्प करने की. And this is it guys, just follow the series, keep learning each and every day. Thank you so much. I'll meet you in the next video. Thank you.